बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, एनरूट कनाडा के सिलसिले में प्रोग्राम का आज हम दोबारा आगाज़ कर रहे हैं और जैसे पहले पिछले प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। हैदर टीवी पे आप ये प्रोग्राम देखते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो वर्क परमिट के ऊपर है। तो हमारे साथ ज़ीशान रज़ा शेख साहब जो कि टोरंटो के जानी पहचानी शख्सियत हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तानी कम्युनिटी की। तो ज़ीशान रज़ा साहब से मालूम करते हैं वर्क परमिट के हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम सलाम। पिछले प्रोग्राम्स में काफ़ी डिस्कशन हुआ मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे। अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि वर्क परमिट की कितनी किस्में हैं और किस तरह ये हासिल किया जा सकता है। हाँ जी, थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा। बहुत आम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। सबसे ज़्यादा मुझे ये इंक्वायरी आता है पूरी दुनिया से। अच्छा, कनाडा में कैसे वर्क परमिट ले सकता हूँ। राइट। सो जो लोग को पता नहीं है, सो आई स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, राइट। सो माजर जो व्यूअर्स चाहते हैं माशाल्लाह वो भी काफ़ी नॉलेजेबल है। जो जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा बताता हूँ शुरू से जी। नंबर वन, अगर आपने वर्क परमिट लेना कनाडा में, राइट, सबसे पहले आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत है। ओके, राइट। सो जब आप जॉब ऑफर लेंगे, फिर बेस्ड ऑन दैट जॉब ऑफर, फिर we have different categories to apply under in Canada. Yeah, under the labor market impact assessment. Right. इसको हम LMIA कहते हैं या LIMA, right? Yeah, under the provincial nominee programs, जो इनके separate programs are per province, right? जी. Or going back to your original question, how many types of work permit are there, right? So there's open work permit and closed work permit. Okay. Open work permit is based on a certain number of years or duration in which you can work any job. A closed work permit is only based on that certain job. Oh, okay. Right? For a certain company. Like if you get approved for LMIA, you'll be given a closed work permit based on the duration of the contract of the employment, right? Right. So, Abhi, I just mentioned LMIA, so maybe I think it's best to tell the viewers what the LMIA is. Basically, अगर कोई बार है अभी कनाडा से जो लोग इंटरेस्टेड है यहाँ काम करने के लिए जी, अगर आपको कोई एम्प्लॉयर से यहाँ कांटेक्ट होता है ऑनलाइन, सो मोस्टली आपने ऑनलाइन अप्लाई करना। अगर कोई या किसी रेफरेंस से कोई दोस्त है जो कनाडा में रह रहे हैं ने आपको रेफ़र किया जी, अगर वो एज ए एम्प्लॉयर वो चाहता है आपको एज ए फॉरेन स्किल वर्कर आपको हायर करे अपने कंपनी में, फिर वो आपके लिए एक LMIA एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट, ऑन योर बिहाफ। सो LMIA is not done by the applicant. ये LMIA process is done by the employer. By the employer, okay. हाँ जी, ठीक है। So and they usually come to the lawyer, right? या अगर जब lawyer के पास आते या मेरे पास या employee आते से मेरे पास ये job offer, ये मेरा company है, आप मेरे लिए LMIA अप्लाई करो, या मेरे पास direct employer आता है, so ये मैंने इनको hire करना जी, ये आप हमारा LMIA करें, right? फिर मैंने work permit separately करना उसके बाद, right? So I'll tell you the difference, that the work permit is actually separate from LMIA, but LMIA is the prerequisite to get a work permit, right, in Canada, right? So going back to the LMIA, LMIA has to be done on behalf of the employer, just as I mentioned here, and they have to be and this application has to be submitted to Service Canada. Okay. हमने Service Canada को ये application submit करना और इनको ये बताना on behalf of the employer. Okay. Or and the employer must pay $1,000 fee, application fee. Okay. Paid by the employer, not the employee. Oh, okay. But ये काफी strict, this is very strict, right? The Canadian government says the employee, अगर employer को ज़रूरत है, they should be paying for the application fee, right? Right. So हम एम्प्लॉय जब ये हमने LMIA करना है, फिर हमने एम्प्लॉयर को पूरी फाइनेंशियल्स हमने प्रूव करना है that this is a profitable business, yeah, right? इनको ज़रूरत है, लेबर शॉर्टेज है, right? या प्रूव करना होता है क्या? हाँ जी। सो अगर एम्प्लॉयर मेरे पास आता है कहते ज़ीशान ये आप करो, ये हमारा कंपनी है, ये हमारा फाइनेंशियल्स है, ये हमारा पूरी डॉक्यूमेंट्स है, राइट? जो आपको चाहिए हमसे पूछ। सो मैं इनको एक लिस्ट देता हूँ, सो ये मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर मैंने सर्विस कैनेडा को ये पूरी एप्लीकेशन प्रिपेयर करना, इनको सबमिट करना ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। फिर ये मैं फाइनेंशियल सबमिट करूँगा, इनका पूरी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, इनका CRA डॉक्यूमेंट्स, राइट, इनका जो जितने उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए, राइट, इनको ये वो भी सबमिट करना, राइट। तो लीमा के बगैर वर्क परमिट नहीं मिलता? लीमा के बगैर वर्क परमिट मिल सकता है, बट सबसे ज़्यादा उस पर मिलता है LMIA। LMIA is applicable to all of Canada. जो बाकी वर्क परमिट की यू ऑल्सो गेट डिपेंडेंट वर्क परमिट, शायद हमने थोड़ा सा पिछले एपिसोड में हमने बात किया। कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें? या एक है ओपन वर्सेस क्लोज्ड, राइट? सो बेसिकली वन अदर वन, फॉर एग्जांपल just going back, the missus gets a student visa, wife को student visa मिलती है, फिर भी husband apply कर सकता है
close work permit के लिए, right, उस duration base पे, right, जितनी लंबी वो duration इसकी student visa, उसी duration पे husband apply कर सकता है as a dependent for a work permit, right? Open work permit, not closed. Yeah, open work permit. Sorry. Right. So he could apply for open. So this is one example. Also, you could get a work permit through the provincial nominee program. अगर कोई ऐसे province है, for example, Saskatchewan या Nova Scotia या the Atlantic immigration program, उनके अपने categories में है. अगर आपको वहाँ job offer मिलता है, पर you could apply directly under their program. And अगर आप successful, पर उसी basis पे आपको so called immigration मिल सकती है, right? And for immigration, I saw your work permit to work legally. Then after working, Shad, your next question is how long do you have to work to get to permanent residency? अगर work हर बंदा ये कहता है मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ, but how do I convert my work permit to permanent residency, right, in Canada? So अगर ये for the next question, I'll answer this. Minimum, depending on the ये भी all circumstantial है. कोई provinces, for example, in Newfoundland, वो चाहते हैं आपको सिर्फ 3 महीना काम करे. अगर आपको 3 महीना आपने, which is usually probation period, हर जॉब के लिए एक probation period है 3 महीना. अगर आपने already 3 महीने के लिए apply किया, आप under that permission nominee program, you can apply for so called direct permanent residency with support of the employer. Okay. हाँ जी, इनको वो आपको support करेंगे, आपको document issue भी करेंगे, right, saying that this person is be working with me, right? तो इस सूरत में जैसे students हैं, उनको allow है certain hours काम करना, तो वो या एजुकेशन के दौरान या एजुकेशन के बाद क्या वो वर्क परमिट उसके लिए कर सकते हैं? जो स्टूडेंट आते हैं कनाडा, सबसे पहले इनको वर्क परमिट के अटैच होता है with their student visa, but वो limited, right? Limited, just sort of because जो rule था 20 घंटे का rule था, अभी for this year, for 2023, government is allowing to work unlimited hours, ठीक है? Okay. लेकिन वो that's just a work permit during the duration of their study period. अच्छा. अगर usually अभी क्या होता है, अगर आपने designated learning institution से अपने studies complete किया, DLI, जो हमने पहले mention किया, right? In another episode, अगर आपने TLI institution से complete किया studies, पर आप you're eligible to apply for a postgraduate work permit, right? Based on the duration of the studies. So अगर आपने 2 साल का course किया, then you get a 2 or 3 year permit. If you did like 3 years, then you get 3 years, right? If you did a 1 year course, आपको 1 year postgraduate work permit मिलता है, right? Right. उसपे और उसका आप extend भी कर सकते हैं, right? Right. यहाँ पे एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, ये जैसे कोई, जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैं बैक होम में से अप्लाई करता हूँ वर्क परमिट के लिए या कोई किसी भी जॉब के लिए, तो क्या ये यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि भाई आप पहले कनाडा में देखें कि आपको इस एजुकेशन का और इस फील्ड का बंदा यहाँ पर नहीं अगर मिल रहा है, तब फिर आप बाहर से बुलवाएं बंदे को जी? तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर? कोई provinces कहते हैं अगर it's depending on license versus non-license, right? For example, कोई आता, कोई नर्स थी अपने कंट्री में, राइट, खातून, और या यहाँ के नर्सिंग डिग्री इक्विवेलेंट है या नहीं है, वो सबसे पहले प्रोविंस ये देखता है अगर आपने हायर करना है, अगर इनका जो क्रेडेंशियल्स है यहाँ एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, पर वो उन्हें प्रोविंशियल बोर्ड से अपनी डिग्री पहले इन्हें एवेल्युएशन के लिए भेजना, राइट? सो अगर एक्सेप्टेड वो ये शायद कहेंगे नहीं 1-2 कोर्सेज अपग्रेड करना है, राइट? पर ये भी एक शायद मसला हो सकता है, राइट? पर शायद लेबर जॉब्स के लिए, जो लेस क्वालिफाइड जॉब्स के लिए, वो इनके लिए थोड़ा सा आसान है. जो लाइसेंस के लिए लोगों को दे हैव टू मेक देयर लाइसेंस अक्रेडिटेड फर्स्ट, फिर वो जॉब कर सकते हैं, राइट? ओके. तो हर प्रोविंस का यहाँ पे अलग अपना वो है वर्क परमिट के हवाले से. तो वर्क परमिट ये फेडरल वर्क परमिट, राइट? लेकिन हर प्रोविंस के जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, so ये थोड़ा सा हमने we have to understand federal requirements और provincial requirements और, but लेकिन there's some ministries under provincial and there's some federal ministries. जो the ministry of labor वो per province है. अच्छा. Healthcare and labor is under provincial, right? And anything, and federal immigration is under immigration, for example, right? And like for example banking, right? So because that's federal, right? So that's just one example I'm thinking top of my head. So वर्क परमिट के दौरान जो लोग जहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, so जैसे बाज़ जॉब्स हैं जो कि यूनियनाइज्ड हैं और बाज़ हैं जो नहीं हैं, तो अगर किसी एम्प्लॉई के साथ कोई मसला हो जाता है तो वो किस तरह से कवर होगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉई अगर कोई बीमार हो जाता है तो जैसे इंश्योरेंस के हवाले से आपसे बात हुई थी, तो ये थोड़ी सी और वजाहत कीजिएगा.
ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے یونینائز obviously ان کے پاس رائٹس ہے یونینائز اینڈ آپ شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر if he's a work permit can he still get unionized versus non-unionized, yeah, right? exactly, yeah, right. یہ بھی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا, right? And for this I would have to just look into the specific job itself, look at the program itself, look at the job type, right, and look at and see whether or not he's entitled to the medical benefits, entitled to the for example a lawyer, right, to dispute on their behalf, right? Agar wages ka dispute karna, right, increase the wages, right? If they're unionized, right, will they be protected by the union as a foreign worker? So right, so I need to look into more into detail with regards to their prospective jobs, right? شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ورک پرمٹ پہ یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو تمام وہ فیسلٹیز مل سکتی ہیں جو یہاں کے رہنے والوں کو ملتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ سوال پہلے بھی آپ سے میں ڈسکس کر چکا کہ گھر خرید سکتے ہیں وہ لوگ؟ ابھی کینیڈین گورنمنٹ نے 2 سال بین کیا آن فورن امیگرینٹس, بٹ لیکن جنوری فرام 2023 فار نیکسٹ 2 years فورن امیگرینٹس وہ گارڈ نہیں دے سکتے کینیڈا میں, لیکن اس میں ایکسیپشنز بھی ہے, اس میں پی آر بھی آتے, رائٹ, جو پرماننٹ ریزیڈنسی آتے, ریفیوجی سارے آتے ہیں, اینڈ hopefully I pray that work permit holders are also included in this, because this is a very new law. It just came out last week. یہ ایک ہفتہ, right, میں بھی ابھی اسٹڈی کروں, میں نے اسٹڈی کیا, مجھے پتہ ایکسیپشنز ہے اس کی, right, میں نے پڑھا بھی تھا, اور right, so it's time, but I know there's exceptions to rules, right? پر اگر کوئی آنا چاہتا ہے یہاں کینیڈا ورک, اور اگر ان کو ورک پرمٹ مل گیا, اگر یہاں کام کر رہا ہے, وہ مجھے کانٹیکٹ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, پر میں ان کے لیے معلومات کر سکتے ہیں اگر ان کو گھر لے سکتے یا نہیں لے سکتے, ڈپینڈنگ آن دیئر ورک پرمٹ اینڈ سرکمسٹانسز, رائٹ, اسپیشلی انڈر دا نیو لا, رائٹ. زیان صاحب ایک سوال اور آپ کے لیے کہ جو ریفیوجیز آتے ہیں یہاں پہ وہ ظاہر ورک پرمٹ ان کو مل جاتا ہے, لیکن وہ اپنا کیس فائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایز اے ریفیوجی ان کا کیس ایکسیپٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یہ بھی ان کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن اگر خدا نخواستہ کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو جس دوران انہیں نے فائل کیا ہے اور ورک پرمٹ ملا ہے, وہ تمام عرصے انہوں نے کام کیا ہے, کیا وہ ورک ایکسپیرینس ان کے کام آئے گا امیگریشن کے حوالے سے؟ اگر انہوں نے فل ٹائم کینیڈین ورک ایکسپیرینس کام کیا, رائٹ, فل ٹائم جاب انہوں نے ایکسپیرینس لیا, وہ دکھا سکتے پی, اگر امپلائر نے ان کو جاب لیٹر بھی دیا, پے سبز بھی ہے, سب کچھ, رائٹ, اگر ان کو پروف آف امپلائمنٹ, رائٹ, اگر وہ سب کچھ دکھا سکتے ہیں, انہوں نے اپلائی کیا, then they can apply for any of the programs based on their experience, like Canadian experience class, right? So what we have to do, ہم نے یہ پہلے دیکھنا ہے, رائٹ, اگر وہ پارٹ ٹائم کام کرے, فل ٹائم کام کرے, رائٹ, اگر وہ کانٹریکٹ بیسس پہ تھا یا, رائٹ, ہم نے ڈپینڈنگ جتنی بھی سرکمسٹانسز ہیں ہم نے وہ دیکھنا ہے. لیکن اگر فل ٹائم پرماننٹ جاب تھا, رائٹ, آپ کو یہ سیلری جاب مل رہا تھا, لیکن آپ کا کیس ریفیوز ہو گیا, پھر کیا ہوا, رائٹ, اس میں جو آپ نے ایکسپیرینس لیے وہ کاؤنٹ ہونا یا کاؤنٹ نہیں ہونا, رائٹ. سو اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے, پوری ڈاکیومنٹس ہے, آپ کا امپلائر کا بھی سب, وہ آپ کو بھی, وہ بھی چاہتے ہیں آپ آ جائے واپس, وہ بھی نہیں چاہتے آپ جائے اگر آپ کو ریفیوز ہو جائے, بیکاز یو ہیو ٹو لیو. پر اگر آپ کو ڈپورٹیشن آرڈر آتا ہے, پر آپ نے کنٹری کو آپ نے چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو اس سلسلے میں امپلائر کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, لائک اگر اس کی طرف سے کوئی لیٹر ایشو ہو کہ ہی از اے گڈ امپلائی, اور اگر ریفیوجی ہیئرنگ ہو رہا ہے, آپ امپلائر ایز اے وٹنس آپ کال کر سکتے ہیں, رائٹ, یہ میرا کلائنٹ کا امپلائر ہے, وہ ان کا حق میں بولنا آیا, رائٹ, پر ان کو میں لے کر آؤں گا ایز اے وٹنس سے, یا ان کا ایفیڈیوٹ ہوں گا, سی ان کا جو نوٹرائز ایفیڈیوٹ سے, یہ ان کا یہ کام کیا, ہی از ڈوئنگ ویری ویل ورک, ہی از کنٹریبیوٹنگ ٹو آور کمپنی, بیکاز آف ہم نے بہت اچھے سیلس ہم نے اچیو کیا اس سال, رائٹ. فار ایگزامپل, رائٹ, آج سپورٹ ہم مل سکتے ہیں, رائٹ, جسٹ ٹو ٹرائی ٹو کنونس دا جج جو ہمارا جو امیگریشن ہیئرنگ میں ہوتا ہے, رائٹ, as a key witness, right, of supporting the applicant, right. جیسے دبئی وغیرہ میں ہوتا تھا, مڈل ایسٹ میں, کہ آپ جاب کے لیے جاتے تھے تو بعد میں ورک پرمٹ پہ کنورٹ کرا لیتے تھے, تو کیا اس طرح کا کچھ سلسلہ کینیڈا میں بھی ہے؟ اگر یہاں وزٹ ویزے پہ جا کے, جب اگر ویزا کے لیے آپ کے لیے جاب آفر چاہیے, رائٹ, نمبر 1, رائٹ, وہ LMIA پروسیس دوبارہ آتا ہے. جیسے دبئی اور مڈل ایسٹ میں ہوتا تھا کہ وزٹ ویزے پہ گئے, بعد میں ان کو جاب کا وہ ہو گیا اور انہوں نے کنورٹ کرا لیا, اس طرح کا کچھ سلسلہ کینیڈا میں ہے؟ کنورٹ کر سکتے ہیں, رائٹ, آپ اپنا ویزا کنورٹ کر سکتے ورک پرمٹ, لیکن آپ کو امپلائر کی ضرورت ہے, نمبر 1 جاب آفر, رائٹ, اور ایک پری ریکوزٹ اسٹیپس ہے, رائٹ. اچھا, وہ ہم وہی دوبارہ آتا ہے, یا ہم آپ پروونشل نامنی پروگرامس کو دیکھو, اچھا, یا آپ LMIA, رائٹ, جو آپ کا امپلائر آپ کے لیے ایک لیگل مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ اپلیکیشن کر سکتا ہے آپ کے لیے, رائٹ. اسی میں یہی ہوتا ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی LMIA,
the employer आपके लिए apply करता है, right? So this is वो हमने Service Canada के साथ हमने application भेजा, not IRCC, not Canada Immigration, वो हमने बाद में भेजना इनको, हमने पहले Service Canada को भेजना, Federal Government हमने इनको ये मुतमिन करना, saying ये temporary foreign worker, ये employer वो इनको hire करना चाहते हैं, and ये बंदा भी Canada में हम ये visit, right? Right, he's an inland. It's called the inland. वो work permit come towards एक मिनट बाद में बात करते हैं, चीज़ मैंने mention करना because LMIA और work permit connected है एक दूसरे से, right? So LMIA में ये है अगर the Service Canada वो interview लेता employer से, अच्छा, अगर employer satisfactory तो आप देखो वही, because सबसे पहले ये पूछेंगे इनसे आप इनको जो Canadian residents यहाँ रहते हैं, Canadian जो इनके पास PR है और citizenship, इनको hire क्यों नहीं, इनको preference क्यों नहीं दे रहे, पर हमने इनको ये देखा हमने advertise भी किया और ये वो इतने resume आए, ये लोग qualified नहीं है या over qualified या under qualified है, या मुझे कोई नहीं मिल रहा because मेरा गैस स्टेशन है Northern Ontario में, ना कोई मैंने रात को 24 hours से खोला, ना मुझे nice shift supervisor नहीं मिल रहा position के लिए, ये weekends के लिए मुझे कोई नहीं मिल रहा, पर इसलिए he's ready to work या she's ready to work, पर वो इनके लिए इसलिए मैं hire करूँ, या मैं कोई restaurant खोल रहा हूँ Pakistani Indian restaurant, मुझे I need a who could cook Pakistani cook चाहिए, हाँ जी, cuisine, right, specific cuisine, right, specialty, right, जो हमारे जो dishes है, right, जो आम लोग cook नहीं कर सकते, इनके पास experience नहीं है, so हमने ये certified cook ये country से, ये हम ये South Asian cuisine वो यहाँ पे खा सकता है, right, he has the certification, only he's qualified, right. इससे ये बताइएगा कि जैसे मैंने कंपनी खोली है, 2-3 साल पुरानी कंपनी है वो, तो क्या मैं अपने भाई को या किसी भी रिलेटिव को वर्क परमिट के लिए कर सकता हूँ? ये LMI एक दोबारा आता है, राइट? इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? हाँ, LMI ये है, you have to take an interview with the Service Canada. आपने 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट करना ऑनलाइन, on Job Bank, on Indeed, on 3-4 different platforms आपने, right? जी. आपने $1,000 fee देना, right? आपने अपना financial submit करना, accounting, you have to be designated as well. ये prerequisites है LMI से पहले. अच्छा. आपने you have to register to become a designated employer. Right. आप डेजिग्नेशन मिले, कोई प्रीरेक्विजिट्स आपने पूरा करना, फिर यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर LMIA. फॉर LMIA के लिए आपने अपने प्रॉफिट्स भी दिखाना, जितने लोगों ने अप्लाई किया इनका रेज्यूमेज भी आपने रीज़न बताना आपने क्यों रिफ्यूज़ किया, और फाइनली आपका इंटरव्यू होता है सर्विस कैनेडा से. अगर सर्विस कैनेडा सेटिस्फाइड वो आपको एक पॉजिटिव डिसीजन इशू करेंगे, और उस पॉजिटिव इशू के साथ वो आपको एक LMIA नंबर देंगे. उस LMIA नंबर से हम वो वर्क परमिट पे हम लिखेंगे, because work permit, if you have an LMIA positive number, please add that to the work permit. Right. For they directly link it to the work permit. He's applying on the basis of a positive LMIA decision, based on this LMIA number issued by Service Canada. Right. जैसे कनाडा से बाहर लोग बैठे हुए हैं कि कोई जॉब के लिए LMI के बगैर अप्लाई करता है और उसको जॉब ऑफर हो जाती है. हाँ जी, हो सकता है based on the provincial requirements too. LMIA is the federal requirement, right? अच्छा. वो हो सकता है, direct हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अभी मैं right now I'm doing one right now for a client. अभी Nova Scotia में, right? Under the Atlanta Immigration Program, एक इनको job offer मिला वहाँ, right? Hospitality sector में, और direct हम अभी इस job offer को हम under the Atlanta Immigration Program. अच्छा. उस basis पे हम apply करेंगे. Not LMIA. अच्छा. Under the Atlanta Immigration pilot. So now pilot था अभी ये program. Abhi it's now I think it's not permanent for the next 5 years. They're going to keep the Atlantic Immigration Program. उस basis पे हमने अभी apply किया for him for direct work permit. Right. Based on the job offer. Okay. जैसे साहब ये होता है कि यहाँ पे जैसे कोई ABC कंपनी खोल ली किसी ने, तो उस सूरत में वो कोई अपना किसी को बुला सकते हैं, या जैसे उसमें तमाम उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी होंगी या वो होगी, इस तरह का कुछ सिलसिला? और सबसे पहले आपने डेजिग्नेशन लेना, मैंने पहले भी बताया था. अगर आपने LMIA कंपनी खोलना, you have to be 3 years, you have to show profits, right? आपने अपना profits दिखाना. अच्छा. आपने आपने accounting, CRA documents, tax documents, right? Designation लेना, ये पूरी process है, right? मैंने खुद LMIA applications किया. अच्छा, good. और अल्हम्दुलिल्लाह successful भी किया. Very good. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. Very good. Right? So and उसी से मैंने खुद, मुझे पता बहुत ज़्यादा काम है, especially financial documents जो aspect है, right? उसमें आपने और इनको satisfy भी करना है, right? कभी-कभी ये भी होता है, government ने मुझे email किया, we're still not satisfied, send additional information. अच्छा. पर हमने और information बतानी या और explanations that is इनको लिखना है, पर ये in reasons, for these reasons we are
we cannot find any local workers. अच्छा. But towards the additional information रखते हैं. And going back to, we were discussing the other ways as well. For Atlantic immigration program, you don't need work permit. You need you could get direct permanent residency. अच्छा. With the job offer. So कभी-कभी आपको work permit की ज़रूरत नहीं है. आप direct permanent residency के लिए apply कर सकते हैं under some provincial programs. Without the LMIA and without the work permit. See, work permit because ठीक है, हाँ आज का topic है work permit है. But लेकिन जो end goal है usually लोगों का permanent residency लेना. So permanent residency आप ले सकते हैं depending even directly from the province without even work permit. direct PR के लिए apply कर सकते हैं. But लेकिन in the meantime they'll give you a work permit. You know वो आपको you can't work without a work permit legally in Canada. आप आएंगे पर आपको एक temporary work permit देंगे. जी. जिसमें आप काम करते जब तक आपको PR नहीं मिलना, right? तो शेख साहब बताइएगा कि जो प्रोविंशियल या फेडरल के अलावा जो दीगर प्रोग्राम चल रहे हैं उनके थ्रू अगर होते बंदों का तो उस सिलसिले में क्या कौन सी आप फॉर एग्जांपल लाइक जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं बगैर उसके आपने आप डायरेक्ट अप्लाई करना वर्क परमिट के लिए आपको जॉब लाइक वो पूछा आप कौन से बेसिस पे अप्लाई करेंगे वर्क परमिट लाइक आप जॉब के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं राइट अगर कोई कंपनी है राइट जैसे कौन से प्रोग्राम आजकल एक्टिव हैं हाँ एक है इमिग्रेशन अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम एक है सस्कैचुअन नॉमिनेशन इमिग्रेशन प्रोग्राम उसका आपको वर्क परमिट आप सिर्फ को जॉब ऑफर जरूरत है जॉब ऑफर की जरूरत भी नहीं है अच्छा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन योर एजुकेशन आपको डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं राइट और अगर वर्क परमिट लेना आप ऑन्टेरियो का प्रोग्राम भी दे सकते नोवा स्कोशिया का प्रोविंशियल प्रोग्राम भी दे सकते हैं राइट आप हर सूबे का थोड़ा सा अलग है न्यूफीलैंड का भी देखो आप दे सकते हैं राइट उस पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं राइट फॉर वर्क परमिट एंड फॉर पीआर राइट बेस्ड ऑन द जॉब ऑफर राइट आपको सिर्फ जॉब ऑफर सबसे मुश्किल है सिर्फ जॉब ऑफर जो है लेकिन है जॉब ऑफर बिकॉज कैनेडा इज लेबर शॉर्टेज अगर आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला आपको जॉब ऑफर मिलना आप पूरी कैनेडा में कोशिश करो जहाँ आप मिलेंगे इंशाल्लाह ताला या हम उस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का हम पहले देखेंगे अगर आप एलिजिबल है या इफ नहीं है फिर हम LMA दो तीन ऑप्शंस है अच्छा सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है राइट सो दो तीन ऑप्शंस है टू गेट वर्क परमिट राइट अच्छा ठीक तो जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहेगा वहाँ से तो उसको जो मुख्तलिफ कैटेगरीज आपने बताई हैं इनमें से किसी में भी कर सकता है LMI के अलावा भी और जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि जो एम्प्लॉयर है उसको ये बताना होगा कि हमने ऐड दिया लोगों को लोकली कोशिश की कि यहाँ से मिल जाएं लेकिन नहीं मिले तो इसलिए हम फॉर एग्जांपल कुक है तो कुक को हम वहाँ से बाहर से बुला रहे हैं लाइक पाकिस्तान से इंडिया से या किसी भी कंट्री से तो वो प्रूफ करना होता है आपको जी राइट जी डेफिनेटली वो उसको हमने ये कहना ये ही वाज अ सर्टिफाइड शेफ तो इसका भी हमने बताना दिस इज द पर्सन we're hiring under this NOC code we're hiring him as a cook right or basically or yeah your tier system because your prana system आया point based system tier system right so and now they've implemented that recently too but inshallah उसको भी हम next time बात करेंगे but लेकिन आपने प्रूव करना ठीक है ये बंदा he's foreign trained he has a certificate he's qualified he's really वो इनको सिर्फ he's specialized his speciality है अच्छा you know basically South Asian cuisine में he's a specialist right and when he's licensed he's certified and yeah he's experienced and he has वो सिर्फ पका सकता है जैसे I want to open South Asian restaurant और मैंने ऐसे डिशेस पकाना है जो हर बंदे को नहीं आती इसमें एक चीज़ और ये बताइएगा कि जैसे लेबर क्लास है फॉर एग्जांपल प्लम्बर है इलेक्ट्रिशियन है जिनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है ना वो तंदूर वाला है या कोई मस्जिद का पेश इमाम है तो वो इनको अगर किया जाए तो उस सिलसिले में क्या प्रोसीजर है अभी एक न्यू प्रोग्राम खोला था न्यू ब्रांसविक में अच्छा न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम ये भी लेबर जैसे वहाँ भी बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है ये लेबर जॉब्स ये सिर्फ लेबर क्लासेस के लिए खोला 6 कंपनी है राइट अच्छा and ये companies are even without IELTS test अगर without English testing जो इनका educated नहीं है but based on experience अगर आप online apply करें through any of these companies ये 6 companies right अगर आपको job offer issue करेंगे आप direct वहाँ आ सकते direct work permit direct वो बुलाएंगे डायरेक्ट आपको इंग्लिश खुद सिखाएंगे आपको पूरी आपको फैसिलिटीज भी देंगे राइट बिकॉज़ न्यू ब्रांसविक में बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ से ईस्ट है राइट ऑन्टारियो से राइट वहाँ लेबर शॉर्टेज भी आ रहा है फिर इसलिए वो दैट्स व्हाई इसका नाम है क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम तो इसके लिए क्या लॉयर के थ्रू प्रोसेस करना पड़ेगा या कंपनी करेगी इसका ये एप्लीकेंट जो है उसने खुद अप्लाई करना ऑनलाइन अच्छा राइट डायरेक्ट बेस्ड ऑन हिज स्किल्स राइट लॉयर को भी हायर कर सकते हैं राइट देयर मे बी एन ऑप्शन देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव राइट लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम आता है यूजुअली जब व्हेन यू अप्लाई इनको सिर्फ पहले जॉब ऑफर मिलना अगर इन्हें जॉब ऑफर मिल गया फिर हम
پھر دین وی اپلائی انڈر دس پروگرام. پھر آپ لائر کو ہائر کرو. جاب آفر پھر آپ نے خود لینا, اپلائی کرنا آن لائن ڈائریکٹلی. جب آپ کو جاب آفر مل گیا پھر آپ کوئی لائر کا کانٹیکٹ کر سکتے. دیکھو مجھے وہاں میں نے کینیڈا اپلائی کیا نیو برانزوک میں پروگرام کر, مجھے ڈائریکٹ جاب آفر مل گیا. پھر آپ میرے لیے اپلیکیشن آپ میرے لیے سبمٹ کریں. رائٹ. اس میں ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے کینیڈا میں ہوتا ہے کہ الیکٹریشین ہے یا پلمبر ہے, اس کو پراپر لائسنس لینا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن بیک ہوم میں یا ایشین کنٹریز میں موسٹلی جو پلمبرز ہوتے ہیں یا الیکٹریشین ہوتے ہیں نارملی ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا, وہ بغیر لائسنس کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں اگر وہ یہاں آتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو کیا ان کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا, لائسنس لینا پڑے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی انگلش بھی اتنی اچھی نہیں ہے, نہ ان کی ایجوکیشن اتنی زیادہ ہے. ہاں جی, اگر ان کو جاب یا اپرینٹسشپ ان کو مل سکتا ہے یہاں آ کر, رائٹ. ٹھیک ہے, اگر کوئی کمپنی ان کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, کمپنی کے پتہ ان کے پاس لائسنس نہیں ہے بلکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, رائٹ. اگر کمپنی ان کو کورسز آفر کر سکتے ہیں, انگلش نمبر 1 انگلش کورس, نمبر 2 میں بھی اپ گریڈنگ کورس جو ان کو اسکلز دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ, جو وہ ویلیو بھی کر سکتے ہیں, رائٹ. سو ٹھیک ہے, اگر ان کو کام آتے نہیں آتے, رائٹ, پھر وہ ان کو اگر وہ چاہتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا کمپنی, رائٹ. اب یہ ہم نے پھر یہ تھوڑا سا پہلے ہم نے بات کیا, ایک ڈپینڈز لائسنس ورسز نان لائسنس. اگر لائسنس والا جاب ہے جیسے پلمبر, کنسٹرکشن ورکر, ان کو سرٹیفکیشن چاہیے پھر یہاں کر, انہیں اپنے کریڈیشن کرنا, یا وہ خود کریں یا اگر یا وہ ایسے کمپنی کے ساتھ اپلائی کریں جو وہ ان کے لیے جو اسپانسر کر سکتے ہیں, رائٹ. سو ہیلپ دم ٹرانزیشن, رائٹ, ایک ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے, رائٹ. دے ول ہیلپ دم get certified, پہلے انگلش سیکھو, پھر سرٹیفکیشن جو ریٹن کورسز اینڈ میں پریکٹیکل کورسز کمپلیٹ کر کے ان کو لائسنس ملیں گے, پھر ان کو جاب پہ لگاؤ, رائٹ. جی جی بالکل. ہاں جی ذیشان صاحب بہت بہت شکریہ. یہ ورک پرمٹ کے حوالے سے ظاہر ہے بہت لمبا ٹاپک ہے یہ, اور اتنی کم ٹائم میں اس کو ہم سمیٹ نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگین میں اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ حیدر ٹی وی کے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں فون نمبر اور ای میل. اس حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے آپ بے شک ای میل کر کے پوچھ سکتے ہیں یا کال کر کے پوچھ سکتے ہیں ذیشان رضا شیخ صاحب سے, اور اس کے متعلق مزید آپ معلومات لے سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ٹاپک بہت لمبا ہے. انروٹ کینیڈا حیدر ٹی وی کی طرف سے یہ پروگرام جاری رہے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور گرد نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فروخ عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.